visible? आज तो यार आखिरी Yes. क्लास most likely. Yes, sir. It's visual. Okay. प्रतीक्षा, निकिता, ओमकार, राहुल और चिन्मय ने ऐसे ही रख किया है. So most likely this would be our last session, and I hope I have created some value and you learned what was intended to, what I was intended to teach you. Huh? Anyone? कुछ समझ में आया जो पढ़ाया गया फाइनेंशियल मॉडलिंग? अरे यार इतना शर्माते क्यों? कैसे इंटरव्यू लोगे तुम लोग यार? प्रतीक्षा, हेलो प्रतीक्षा. आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा तुमको. हाँ हाँ बोलो. अरे खोला तो था वही. प्रतीक्षा सर मी ट्रॅव्हलिंग मध्ये. और निकिता, आर यू देयर? ओमकार. Yes, sir. तो ओमकार कैसा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? डिड यू लर्न द फाइनेंशियल at least some part? Experience was good, sir. अच्छा. कुछ समझ में भी आया? ऐसे हवा हवा ही रहा सब? नहीं सर, समझ में आया सर. अच्छा अच्छा ओके चलो गुड. और कौन था? निकिता तुम कुछ बोलना चाहोगी क्या? क्योंकि आई हैव, ओहो बट यार इतना इतना पैसिव ऑडियंस आई हैवंट बीन टू एक्सपोज टू सच ऑडियंस. तो इतना पैसिव होगा? तुम लोग एमबीए कर रहे हो यार सीरियसली. अच्छा आर यू ऑन कैंपस? मतलब आर यू टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस एज वेल और सब ऑनलाइन ही चल रहा है तुम लोग का? सर सब ऑनलाइन. अच्छा पूरा कॉलेज ऑनलाइन चल रहा है क्या? यस सर. ओके. तो अभी कुछ खुलना है? अब तो खुल गया है ज्यादातर जगहों पे. हाँ सर खुल गया, लेकिन हमारा नहीं अभी से कुछ. सर मे नेक्स्ट सेमेस्टर से हो जाएगा सर. अच्छा नेक्स्ट सेमेस्टर से होगा. अच्छा अच्छा. हाँ तो यार नेक्स्ट सेमेस्टर में एटलीस्ट आई वांट टू सी योर फेसेस. आई विल डेफिनेटली कम डाउन टू योर कैंपस वंस इन द फोर्थ सेमेस्टर. And I would remember all these names, and I seriously want to see your faces in the campus since you are very inactive in here. Okay. Chalo, so we'll start. This is probably the last session until and unless you had certain doubts or you want me to conduct some remedial classes. Any concepts you couldn't comprehend or anything particularly you want me to teach other than what have been taught in the class, then only I'll conduct other sessions. Otherwise this would be most likely my last session and I will end it up here. Or so yeah, I was teaching you ratio analysis in the last class, and actually I was in a hurry, but I never intended to finish that in the last session, but yeah, I kept it for this session also. So just I'll give you a quick recap of what we had learned in the previous session. So these are the what is ratio analysis? I told you this is the financial statement analysis where we can have a quick analysis of how our financial, how a company is performing with respect to the financials of the company. So these are the types of ratio we had discussed. Growth ratios, profitability ratios, operations ratios, liquidity ratios, and last but not the least obviously is the solvency ratios. Then we went into deep
What are the financial ratios? Oh, sorry, profitability ratio. The profitability ratios were the financial metrics that helps us to ability to generate earnings. How much earning potential does our company have? So profitability ratio tells us that. And in profitability ratio, there are different ratios, namely profit margin ratio, return on assets ratio, return on equity ratios, dividend payout ratio, and price earning ratio, PE ratio, which you called in abbreviation. So we discussed profit margin. Profit margin is the overall percentage of profit a business makes out of revenue. So total revenue would be something else, and out of that total revenue, we have to we have to differentiate our profit margin. So we will differentiate it by using the formula income from operations divided by the total revenue. So how much we are earning from the core operations of the business divided by the total amount earned by the company, we will get the profit margin. Return on assets is simple. Return on assets is equal to net income upon total assets. So how many assets a company possesses, and out of these assets, how much money a company is making out of the total assets it possesses. Then we can get the return on assets. Then we have return on equity, same as the return on assets. This is return on equity. Equity is the amount initially invested by the proprietor or by the shareholders of the company. So how much our equity is earning, net income divided by average shareholders equity, we will get the return on equity. Or where average shareholder equity is equals to current year equity plus previous year equity divided by 2. We will get the average share equity, and based on the average share equity, we will get the return on equity, that is net income divided by the average shareholders equity. Next is dividend payout ratio. Dividend is the amount which has to be paid to the investors of the company or the shareholders of the company. So in order to find out the dividend payout ratio, what we have to do, we have to take into consideration the dividend paid divided by the net income generated by the company. We will get the dividend payout ratio. Price earning ratio, that is PE ratio, we can calculate it by using the formula market value per share. What is the current market value of each share of the company divided by how much earning potential does this share have. So that is earning per share. We will get the PE ratio. Second type of category is the growth ratio. Growth ratio basically helps us to understand how our business is growing with the passage of time. And growth rate ratios we calculate based on the sales growth, income growth, and the assets growth. The sales growth, how much sale percentage of sale has increased with respect to the previous year, more likely, but it can be ascertained irrespective of the previous year or the previous to previous year. But it should have a specified year which we are dealing with, and it also helps us to understand the growth of the product services in the near future. If we want to predict how much sales we would do in the next year, so we have to take into consideration the 4 or 5 year sales. Then we can easily forecast the sales. Okay, and the formula is simple. Sales growth is equal to current year revenue minus previous year revenue and divided by the previous year revenue. Here, the income growth also shows us the percentage of increase compared to the previous year. So, kitni income company ki बढ़ रही है, which we have to calculate. It would be income growth is equals to net profit for the current year minus net profit for the previous year divided by the net profit previous year. Simple. And the third type of is the our assets are growing basically with respect of the with the passage time or in a specified period. ठीक है, the formula is total assets current year की और total assets previous year की, दोनों को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे total assets हमारे जो last year की थी उससे. Then the activity ratio is the third category, and activity ratio is your internet connection is unstable.
Am I audible clearly or I need to switch my place? Can you hear me? Yes, sir. Any distortions are there or it is like flawless? No, all is good, sir. Okay, ठीक है. रेशियो हमको इंडिकेट करता है अपने एसेट्स को कितनी जल्दी कन्वर्ट सकते हैं में, ठीक है, और अपने एसेट्स को हम बेचकर कितनी जल्दी कैश या रेवेन्यूज कमा सकते हैं. तो एक्टिविटी रेशियोज में आते हैं हमारे रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर. रिसीवेबल टर्नओवर क्या होता है? सिंपल होता है, जो भी कंपनी को बिल्स रिसीवेबल है या अकाउंट्स रिसीवेबल है, the any bills which has to yet to be released to the company are the bills receivable. ठीक है, तो इसको आप पता करने के लिए हमको कि how efficient our receivable turnover is, we have to use the formula average receivable turnover is equals to revenue, the total amount which a company is getting, divided by the average accounts receivable. तो कितना हमारा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल रहा, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल फॉर द करंट ईयर को जोड़ देंगे प्रीवियस ईयर से, मतलब 100 अगर था तो 200 हो गया, डिवाइड बाय 2, तो 100 हमारा एवरेज आ गया. और रेवेन्यू अगर हमारा 10,000 है तो विल डिवाइड 10,000 बाय 100, तो विल गेट 1000. तो 1000 इज आवर रिसीवेबल टर्नओवर, मतलब मोटा मोटा. और इन्वेंट्री टर्नओवर इज सेम कि हाउ फास्ट आर stock is getting out of the business, because having a lot of inventory in our warehouse is not a good sign. So we have to always keep in check how fast our inventory is going out of the warehouses and being sold in the market directly. So what is the formula? Simple, sales divided by the average inventory. एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए इन्वेंट्री करंट ईयर की कितना था उसको जोड़ देंगे प्रीवियस ईयर से और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी विल गेट द एवरेज इन्वेंट्री. और फिर सेल से निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाउ फास्ट आर इन्वेंट्री इज गेटिंग आउट ऑफ द वेयर हाउसेज एंड आर बीइंग सोल्ड इनटू द रियल मार्केट. ओके, सो दैट वी कैन कीप अ चेक ऑन द स्टॉक्स अवेलेबल विद द कंपनी. Fixed assets turnover. Fixed assets are the assets which are fixed in nature. I mean to say, for example, the examples of the fixed assets are land and buildings, material, machinery. All these things are the fixed assets turnover. So हमको we need to find out कि how fast convert our fixed assets to the cash or revenue. So we have to put this formula, which is net revenue divided by the total fixed assets. And the fourth category, I believe, is the liquidity ratio. How fast, how quick we can pay off our debts. हम जो भी हमने बाहर से पैसा मंगाया उसको हम कितना जल्दी से जल्दी पे कर सकते हैं, वो हमारा लिक्विडिटी रेशियो बताता है. और इट हेल्प्स अस टू बिकम इंसॉल्वेंट बनने से मदद करता है, ताकि हम अपने सारे पेमेंट्स को चेक कर सकें और वी कैन पे ऑल द एक्सपेंसेस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. ठीक है, तो इसमें 2 रेशियोज आते हैं. पहला है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो. करंट रेशियो तो सिंपल है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. तो हमको दोनों चीज का अगर हमको निकालना है कि हम कितना क्विकली अपना डेट को पे ऑफ कर सकते हैं, सो विल हैव टू कंसीडर दिस करंट रेशियो. करंट एसेट्स को हम जितने भी करंट एसेट्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे करंट एसेट्स, आई गेस यू ऑल वुड नो, और करंट लायबिलिटी को तुमको पता होगा, तो उससे हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं. एंड इट वुड हेल्प्स अस टू understand how quickly we can pay off our debts. And then the quick ratio, company's ability to meet the short term debt obligation with its most liquid assets, especially मतलब quick ratio generally with respect to the cash or cash equivalents. So quick ratio, cash equivalents plus inventory plus accounts receivable divided by the current liabilities. It is somehow related to the current assets divided by current liabilities itself, but we have given it a different name. Last, I guess, solvency ratio. Solvency ratio होता है जो हमारे मतलब it helps our company to become insolvent. Insolvent is a type of situation where a company is unable to pay its debts to the debtors. जिन्होंने भी कंपनी को लोन दिया है, हम उनका लोन चुका नहीं पा रहे हैं. कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया बैंक से
but because sales are so low, revenues is not generated out of the money invested, so a company would become a insolvent. So in order to in order to keep a check on the solvency of the company, what we have to do, we have to consider the solvency ratio. So first is debt to total assets ratio. हमारा debt कितना है with respect to the हमारे पास assets कितनी है, क्योंकि if a company unable to pay the loan, तो फिर क्या होगा कि उसके assets अगर ज्यादा हैं तो फिर company cannot be insolvent. अगर ऐसा हुआ कि debt ही debt है और assets कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो फिर a company can become insolvent. Okay, so this is a simple equation. Total liabilities divided by the total assets. तो जितना ज्यादा हमारा हाँ मतलब इसमें we have to include all the loans and the bonds payable, और जितने भी assets हैं सारे के सारे assets को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है. और फिर यहाँ तक शायद हमने last time discuss किया था. So I give you a quick what we call this recap of what we had done in the last class. Now this is the ratio analysis template. You can see it. Growth ratio for the 2 years. You can see the growth ratio. Sales growth is 25% in the year 2016, 5.8% 2015. Okay. और मतलब growth में हमने पढ़ा था sales growth, income growth और assets growth. तो हम देख सकते हैं कि all the three things are growing with the passage of time. Then the profitability ratios, देखो profit margin is slightly declined with respect to the last year. It was 46.8%, but it has dropped down to 46.6% profit margin. So 0.2% has declined. Return on assets has also declined. Initial, मतलब previous year it was 38.3%, but now it is 33.1% only. Return on equity has also declined. 81.8% it was in the year 2015, and it has dropped down drastically to 62.1%. And then dividend payout ratio 6.7 था 2015 में, and in the year 2016 it is 5.3, and price earning ratio 27 has increased to 31.4%. And this is the activity ratio. तो receivable turnover 2.1 था 2.2 हो गया, inventory turnover 1.9 था 1.4 हो गया, fixed assets turnover 0.6 था 7 हो गया, liquidity ratio करंट रेशियो 3.26 था बढ़ के 3.44 हो गया, क्विक रेशियो 2.47 था 2.13 हो गया, सॉल्वेंसी 0.42 था 0.28 रह गया, ठीक है. So this is the template. So let us discuss the contents of ratio analysis template in detail. Contents of ratio analysis template. This template consists of 2 worksheets, data sheet and ratio analysis sheet. So this is the sheet we had. Okay, so this is our, sorry, you all can see my screen, I guess. So this is our data sheet. Okay, or this is where we have calculated the ratios. Okay, or so we will discuss it. Data sheet workbook has 5 sections. Data sheet अगर तुम देखोगे तो इसके ये देखो 5 sections हैं. कौन कौन से हैं? हेडर, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, शेयर होल्डर्स इक्विटी. हेडर, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और शेयर इंफॉर्मेशन, मतलब ठीक है. और उसके बाद अच्छा यहाँ पे दिया हुआ, उसको खोलने की जरूरत नहीं है. So this is the header, income statement, balance sheet, cash flow और shared information. This is how it looks like. Then hence insert all relevant items from the financial statements. All these data will be helpful in calculating the ratios. तो इसमें हमको ये सारा डेटा शीट भरना पड़ेगा कंपनी के हिसाब से कि कंपनी का रेवेन्यू 2016 में कितना था, ठीक है, उसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे, ठीक है, और 2014 में कितना था, 15 में कितना है और था, और 16 में कितना है. तो इनकम स्टेटमेंट में जो होते हैं हमारे रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, इनकम फ्रॉम कॉस्ट ऑपरेशन,
और नेट इनकम वुड बी द इनकम, और बैलेंस शीट मैं तुमको बताया था इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है और कैश फ्लो कैसे बनाना है। तो दिस इज आवर बैलेंस शीट एंड दिस इज आवर कैश फ्लो, ठीक है। और एक शेयर्ड इन्फॉर्मेशन मतलब शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड टू फिल द अमाउंट्स फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इनटू द ब्लू बॉक्स ऑफ ऑल द 3 years। तो इनमें जिस भी कंपनी का इफ वी आर मेकिंग रेशियो एनालिसिस, वी आर डूइंग अ रेशियो एनालिसिस, यहाँ पे बस यू हैव टू चेंज द अमाउंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंपनी यू आर डूइंग इट। द डेटा यू कैन गेट इट फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। तो 3 साल का एनुअल रिपोर्ट उठाओ और just put all these amount into the blue boxes, यानी कि इन boxes में हमको इनको fill करना है, and that's it, and you are ready with the major useful ratios in this template, ठीक है। हमने डाल दिया और उसके हिसाब से हम अपना ratios निकाल लेंगे। तो दूसरा शीट जो है वो रेशियो एनालिसिस शीट है। दिस इज द रेशियो एनालिसिस शीट, इफ यू कैन सी इट। Growth ratio, activity ratio, profitability ratio, liquidity ratio and solvency ratio. So यही growth, profitability, activity, liquidity and solvency ratio की शीट इस तरीके से होगी, ठीक है। ये हम easily बना सकते हैं। और now we are here to discuss the advantages of ratio analysis. So individual investors, owners, financial professionals use this ratio analysis to determine the company's strength. अगर हमारे पास ये रेशियोज हैं तो हम बेस्ड ऑन दिस वी कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड कंपनीज स्ट्रेंथ कि हाउ, मतलब अगर ग्रोथ रेशियो अच्छा है या खराब है कंपनी का, हाउ प्रॉफिटेबल द कंपनी इज, एक्टिविटी रेशियो मतलब बिल्स रिसीवेबल कितना है, उसका टर्नओवर कितना जा रहा है, लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन कर पा रही है कंपनी, नहीं कर पा रही है, सॉल्वेंसी रेशियो कितना है, उसके हिसाब से वी कैन इजीली डिटरमाइन। Normally, an investor primarily requires a basis for estimating the earning capacity of the company, ठीक है। तो इन्वेस्टर को ये चाहिए होता है ताकि अगर if you want to invest into some companies, then you should definitely go and see the financial ratios of the company. So where you can easily understand how the company is performing, and based on that performance, you can easily make your mind whether to invest in that company or not. Okay. Moreover, the creditors and banks and other lending institutions are concerned with the liquidity or the ability to pay interest and redeem loan within the specified period. So अगर तुमको in the meantime if you need certain loan, तो company would definitely look into the liquidity ratio and the solvency ratio. तो बैंक के पास जाओगे तो बैंक इनको मांगेगा so that they can sanction some amount of loan to you based on your performance. Okay, in addition to the above, management of the company is usually interested in evolving analytical tools to measure cost, efficiency, liquidity and profitability with a focus to make intelligent decision. So अगर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनको they have to make learned decisions. So what we have to do, they have to use certain analytical tools in order to measure the cost कितना आ रहा है उनका, efficiency कितना है प्रोडक्शन में, लिक्विडिटी कितना है और फिर प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। तो अगर ये रेशियोज कंपनी के पास होंगे तो उनका डिसीजन जो होंगे और डिसीजन वुड बी गुड टू मेक द बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल। एट द एंड ऑफ द डे द प्राइम is the profitability of the company. Okay, so it simplifies a company's financial statement, और जो financial statement इतना बड़ा होता है उसको simplify कर देता है ये, और we can easily in a single sheet we can easily see how it has been done, और it is helpful in comparing enterprise of similar industry. ठीक है, तो अगर ये वाला हमारा मान लो रेशियो एनालिसिस फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक का है, और अगर हमको इसको कंपेयर करना है विद अदर बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और SBI, तो फिर वी कैन इजीली कंपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रेशियोज. Finally, these are some of the disadvantages of ratio analysis. Not good for comparing enterprises from different industry. हाँ, तो अब मैं बैंक का था, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको किसी FMCG की ब्रैकेट बैंकाइजर से मैं कंपेयर करूँ, तो फिर ये it is not ideal to do so. So what we have to keep in mind while comparing it with that
it should come from the same type of industry we are dealing. अगर बैंकिंग का है तो बैंकिंग इंडस्ट्री शुड बी देयर. अगर इफ वी आर प्रिपेयरिंग इट फॉर सम एफएमसीजी कंपनी तो फिर दैट इंडस्ट्री अगर हम इसका तरीका कर रहे हैं तो इट शुड बी होटल. तो सॉरी इंडस्ट्री शुड बी द सेम. समटाइम्स कंपनीज में क्लियर to their financial statement to improve their ratio. In such a scenario, the ratio means nothing and will mislead the evaluation. तो कभी कभी कंपनीज कुछ माल प्रैक्टिस करती हैं कि उन्होंने यार रेशियो तो बहुत खराब आ रहा है, तो दे प्ले विद देयर डेटा और फिर वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं. तो अगर वो किया और उसके हमने कुछ मतलब ट्विक करके वी कम अप विद द गुड रेशियोज, तो फिर इट वुड बी मिसलीडिंग और इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन. So while performing ratio analysis, inflation is not taken into consideration, which is one of the hot topic nowadays in India. Inflation hence does not reflect the correct financial situation. तो इसमें जैसे inflation का अगर पार्ट होता तो जैसे कंपनी तो ग्रो दिखा रही है कि हाँ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो उनका नेट प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीजिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस. तो एज सिंस ratio analysis is not considering the inflation element into its making, then it does not reflect the correct financial situation of the company. Okay. And then ratio analysis focus on quantitative analysis, not qualitative. तो बस ये numbers का खेल हमको दिखाता है, but qualitatively क्या हो रहा है वो it does not reflect the actual scenario of it. Okay. So this is all I had for you today. Okay, and I'll share this sheet with you. You can manipulate it and you can use it. All the formulas has been inserted into it, and you just need to pull the data into it, and you will see the results based on it. Okay. So yeah, this is all from my side. If you have any question or any suggestions to me, you are welcome. I have given you your my email ID also. If you feel the certain important aspects has been left out, you just let me know. I'll come and teach you. And if you think you need any more clarification on the topics that I have covered, like from beginning, from the first session where I just showed you how Excel works, and then we worked in Excel and we try to compute certain statements in the Excel, and then the more of the theoretical part, all the VLOOKUP or what we call this sum ifs and all the things formulas I told you. So agar if you feel ki something is not clear in your mind, just let me know. I'll schedule a class for you. If you think something has left out, this should also be a part of our discussion with respect to the financial modeling. Just let me know. If you didn't like my teaching style, just let me know. If you feel that because initially I was more focused with the practical aspect of it, and if you could recall, I was doing it live on Excel sheets, but since most of you does not have access to the laptops and you were joining it using your mobile phones and all the device while traveling, so I skipped I chose theoretical. I preferred theoretical aspect more than the practical aspect of it. Still, if you feel you need any clarification on any topic which I did, you can tell me. Okay. Otherwise, any problem you can ask me. Otherwise, I'll just finish it in like 2 or 3 minutes. 7:40. I'll just finish it. If you do not want to ask anything. And हाँ चलो अब तुम बोलो अगर कोई बोलना चाहता है. सुन भी रहे थे तुम लोग? ऐसे हवा में चल रहा था. खोला फिर बंद कर दिया.
thinking it today. देखता हूँ किसको पढ़ाया है मैंने, कल को कहीं मिलोगे पुणे में तो पहचान तो लूंगा. Ask to start video. Ask to start a video. Ask to start a video. Ask to start a video. Oh, Jadhav. Good to see your face, man. I was dying to see someone. मेरा वीडियो ऑन है क्या? मैं खुद देख पा रहा हूँ. काफी. अब ठीक है. प्रतीक्षा, क्या जादव समझ में आया कुछ? कुछ रह गया क्या? और कोई नहीं है. कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? मायूर यूशु विल स्टार्ट वीडियो लेटर. मैं चला जाऊंगा तब करोगे क्या? चलो ओमकार, तुम ही यार एक थे सपोर्ट मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम. सर मुझे हाँ. सर आपकी टीचिंग अच्छी लगी सर, लेकिन सर आपके वीडियोस बनेंगे सर मुझे समझने के लिए आगे, अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में और जानने के लिए. मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियोस यू आर टॉकिंग अबाउट ना? यस सर. हाँ यार, आई टोल्ड दिस टू वन ऑफ द फैकल्टी टू प्रोवाइड यू द लिंक्स, बट आई डोंट नो कि how they are doing. This is there is one guy from Matrix College ना, ask him कि मिलेगा नहीं मिलेगा. कौन है इनका नाम पता है तुमको? मोहित सर. मोहित सर. मोहित सर बताइए इनको. यस सर. विल दे गेट, इनको ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह क्यों नहीं मिलता है? यस सर मिलेगा. ये 1 तारीख को उनको वेबसाइट पे मिल जाएगा सर. सब लेक्चर 100 के बाद सब लेक्चर उनको मिल जाएगा. उनका और किसी को कुछ और नहीं. चलो फिर. हाँ ठीक है. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर मैन. सबके लिए जिन्होंने शक्ल दिखाई, जिन्होंने नहीं दिखाई, जिनका मैंने नाम लिया या नहीं दिया. और इफ इन केस मतलब you are in need of anything related to your academics, career, job, counseling, anything, so I would be more than happy to help. Most of the time I am in Pune, so you can reach me out. If anyone of you wants to meet me, I can come down to the place nearby to you. We can have coffee or something, or we can discuss. Okay, thank you so much for being wonderful audience. Best of luck for your future. Thank you. Okay. Thank you sir.